going to be very special video जिसमें मैं सब चीज़ें कवर करूँगा। to $2,000. भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। The day you arrive in Australia, दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मुझसे काफ़ी बार ये सवाल किया जाता है, मुझे अक्सर जो इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते हैं, फेसबुक पे आते हैं कि ब्रदर आप मुझे जो ये गाइड कर दें, वो गाइड कर दें, आपको क्या करना है। जो स्टूडेंट्स हैं इंटरनेशनल्स, हम कहाँ अकोमोडेशन देखें, कौन सी जॉब अप्लाई करते हैं, कैसे जो है वो आप अपना मतलब लिविंग यहाँ पे क्या है। तो मैंने सोचा कि एक पूरी कंप्लीट एक वीडियो बना दी जाए। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी स्पेशल वीडियो जिसमें मैं सब चीज़ें कवर करूँगा। द डे यू अराइव इन ऑस्ट्रेलिया एंड यू नो ऑल द वे डाउन, कि आप अपने आप को किस तरह मैनेज करते हो। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो हुएवर यू नो गोना अप्लाई फॉर ऑस्ट्रेलिया स्पेशली, और जिसमें मैं सब चीज़ें कवर करूँगा, उसमें बताऊँगा। गोना बी मे बी अ लिटिल बिट लॉन्ग वीडियो बट इट विल हेल्प यू अलॉट टू अंडरस्टैंड कि आपको स्टेप बाय स्टेप क्या क्या चीज़ें करनी है। क्योंकि काफ़ी हमारे दोस्त आते हैं तो हम उनको अकोमोडेट जब करते हैं सो वो अंडरस्टैंड कि यार ये चीज़ें बेसिक्स जो है ना दे नीड टू नो, और काफ़ी लोगों को इस चीज़ों का नहीं पता होता। तो फर्स्ट थिंग जो मैं समझता हूँ कि जब आप आते हो यार मेक श्योर कि आप जो है वो अपना पुलिस क्लियरेंस चेक लेकर आओ। यू नो मेनी पीपल दे फॉरगेट अप्लाई फॉर योर ड्राइविंग लाइसेंस विच इज़ मस्ट नीड टू हैव यू हैव, और अपना पुलिस क्लियरेंस चेक जो है वो साथ लेके आओ, क्योंकि दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल हेयर एंड यू गोना नीड दैट लेटर ऑन। पहली चीज़ मैंने आपको बता दी। दूसरी चीज़ अप्लाइंग फॉर योर अकोमोडेशन। लुक व्हेन यू गेट हेयर कि यार आपको पता नहीं होता कि आप किसके पास आ रहे हो। अक्सर आप किसी दोस्त के पास आ रहे होते हो बट स्टिल यू नो यू लीव देयर, उसके ऊपर भी बोझ बनते हो बिकॉज यू नो आई नो दैट दिस इज सम टाइम यू नो इट्स नॉट वेरी इजी। सो यू नीड टू मेक श्योर कि यार यू अप्लाई for accommodation before you get here. How do you apply? You can apply through marketplace, through Gumtree. These are the apps कि जिस पे आप लॉगिन करके आप किसी को कह सकते हो कि यार कैन यू फाइंड अ लोकेशन फॉर मी, और यू कैन फाइंड फॉर योर सेल्फ एंड यू कैन टेल देम कि आई एम अराइविंग ऑन दिस डेज, सो प्लीज़ यू नो इफ़ यू कैन स्पेयर दिस अकोमोडेशन दिस रूम फॉर मी। यहाँ पे जो रूम्स की प्राइसेस हैं वो इन पर्थ, आई लिव इन पर्थ, सो आई कैन टेल यू एग्जैक्टली यू नो व्हाट आर द प्राइसेस हेयर। इट्स फ्रॉम $150 to $250, यू नो बिटवीन दिस रेंज। कि यार आपको अगर एक सिंगल रूम चाहिए, छोटा सा रूम होगा नॉर्मल सा, एंड ये है कि स्टार्ट के लिए वो बेहतर है। और उसमें ये होगा कि आपको एडवांस पे करना पड़ता है। आई थिंक देर आर लाइक मे बी 3 weeks और 4 weeks बॉन्ड दैट यू गोना पे, और 2 weeks का रेंट होता है, या 2 weeks आप रेंट देते हो या 2 weeks आप बॉन्ड देते हो। बट आई मीन लाइक यू नो कि यार फ्रॉम लाइक 150 to 250 यू कैन फाइंड अ गुड रूम। तो यू नीड टू मेक श्योर कि यार व्हेन यू बिफोर यू गेट हेयर आपके पास अकोमोडेशन हो, ताकि आप कहीं अपने आप को मैनेज कर सको, अपने आप को आप एडजस्ट कर सको। दूसरी चीज़, जब आपके पास अकोमोडेशन आ जाती है फिर आप जाते हो एक नई सिम लेने के लिए। सो देयर आर मेनी डिफरेंट नेटवर्क्स, टेल्स्ट्रा, वोडाफोन और ऑप्टस। सो यू गो देयर, यू नो साइन अप, और आपको एक सिम मिल जाती है जिस पे जो विच इज़ योर फ़ोन नंबर यू गोइंग टू बी यूजिंग इन ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज दिस इज़ द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू हैव व्हेन यू अराइव हेयर। थर्ड थिंग, जब आप जाते हो फिर आप अपना TFN टैक्स फाइल नंबर और ABN अप्लाई करते हो। You can watch the ABN video on the YouTube. There is a guy, I don't know his name, but he has you know explained very well how to apply for TFN and ABN. So these are the things you know that you need to apply when you get here. So TFN tax file number is like you're going to be using this for the future when you work here. So you need to have your tax details, and ABN is Australian business number which help you if you're doing any business, or you know कुछ companies ABN accept करती हैं. So you need to have both of it, ठीक है। और उसके बाद फोर्थ जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं समझता हूँ कि वो आपकी होनी चाहिए। हाँ, ऑफ कोर्स यू गो टू योर यूनी और कॉलेज, आप जहाँ पे भी जाते हो आपको मेक श्योर करना है कि आप वहाँ पे जाके उनको इन्फॉर्म करो कि आप आ चुके हो, एंड नाउ यू आर गोइंग टू बी कंटिन्यू फ्रॉम वट एवर द डेज यू नो यू गोना बी देयर। और उसमें आप ये कि अगर आपके पास अभी तक आपके पास कुछ जो है वो कन्वेंस नहीं है, आपके पास गाड़ी नहीं है, सो यू कैन आस्क योर कॉलेज और यूनी टू गिव यू अ स्टूडेंट कार्ड एंड अ स्मार्ट राइडर एज वेल। उसमें स्मार्ट राइडर वो नहीं देंगे, बट इफ़ यू हैव अ स्टूडेंट कार्ड, ठीक है, and you attach your smart rider with this, so you'll get the discount whenever you travel around the buses. But if you want to apply for a smart rider, there are many options around the areas as well. You can just search on Google, apply for smart rider here in Perth. So I don't know other cities, I'm talking about Perth exactly. तो उसमें ये है कि बाकी भी जगह ऐसी होता है, मतलब like you know these are the general things
that will gonna help you in Australia, whole Australia, wherever you go. और ये है कि जब आपके पास वो आ जाता था, then it's easy for you to travel from one place to another place. So go to uni, go to college or get your student card and then you will get the benefit out of it. उसके बाद जब आपके पास आ जाती है ये आपकी कन्वेंस का प्रॉब्लम इशू हल हो जाता है, then you need to find a job. Now where do you go, who you look for? So there are many options in Australia. लाइक फॉर द स्टूडेंट्स, यू नो आई से कि यार कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो स्टार्ट में समझते हैं कि वो डिलीवरी जो है वो फूड डिलीवरी इज़ ईजी ऑफ कोर्स, एंड लाइक इट्स नॉट गुड मनी नाउ बिफोर इट यूज टू बी, बट स्टिल यू कैन मैनेज योर एक्सपेंसेस while doing these odd jobs. Deliveries like Uber, Menulog, DoorDash, there are multiple, you know, deliveries channels where you sign up and you start earning. How do you do that? There are multiple options. Maybe you आपके पास स्कूटी है, अगर स्कूटी पर कर सकते हो आप, इलेक्ट्रिक स्कूटर भी है. If you have a car, then you just go and you know start with the car as well. So इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस होगा, then you can do these jobs here with the car because Uber doesn't require this. उसके बाद सिक्योरिटी है. सिक्योरिटी के लिए आपको जो है वो एक लाइसेंस अप्लाई करना पड़ता है. इट कोस्ट यू लाइक 15 to 200 $1,500 to $2,000 Australian. आप जो है वो कोर्स करते हैं, लाइक 2 weeks कोर्स, and then you apply for exam and then you pass the exam and then you apply for your security license, which is good. Like security, there are many other opportunities as well. So when you go there, you will find multiple options where you know you can work. And yeah, उसके अलावा आप वेयर हाउस में जॉब कर सकते हैं. There are many different warehouses like Bunnings, Target, IKEA kind of things, you know, where they need people, you know, sometime. So आप वहाँ अप्लाई कर सकते हो. सुपर मार्केट्स में आप अप्लाई कर सकते हो, Coles, Woolworth, LD वगैरह big brands. If you have a good communication skill, then you can find a job easily. And how do you find? You go through Seek or Indeed. These are the websites that will help you to apply from there. So these are the options that you know you can have when you get here. आपका जब आते हो आपकी accommodation होती है, आपका जो है वो ऊबर का हो जाता है, आपकी जो मतलब जॉब के रिलेटेड होता है, आप सिम निकलवा लेते हो, आप अपना TFN और ABN अप्लाई करते हो, ठीक है. देन यू अप्लाई फॉर योर जॉब्स एज वेल. You go to your college or you know university, get the student card, and you know that will help you to use transport, you know, local buses around the city. And last thing is like if you are going to buy a car, so you need to make sure कि यार आप कार अगर रेंट पे ले रहे हो तो I think it's very expensive nowadays. I think $200 per week for rent for a normal car, like you know just like a normal car. और उसमें ये है कि आप फूड डिलीवरी कर सकते हो उसमें, बट I'll suggest यार कि buy your car as soon as possible because it doesn't worth you know having someone else's car, you know, and you're just paying rent every week. It is really you know pain in the ass, trust me, because I know some of my friends you know who are doing it. So but it's really you know it sucks. So you need to make sure you know get a suitable car, costs you 2,000 to 3,000. So when you get coming here, if you can afford like bringing you know $3,000 to $4,000 will help you to manage everything, your accommodation, buying a car, you know, doing the course. So these are the things can help you, can support you at the beginning, so you don't have to stress out too much. But ये कि जब आप आएँ, you make sure that you know somebody here that is going to help you out with everything. Get as much information as you can from other people you know who are living here. There are many Facebook groups, you go there, ask them if there is any question. You can ask me on my Instagram as well. If you have any question, I will be more happy. If I have a time, I'll give you answers. और ये है कि choose the right option for yourself, you know. I don't want you to stress out. Like when we were coming here, you know, like 3 years ago, there were many difficulties. There were no option. I myself didn't know anybody, you know, कि who to come, who to meet. तो मुझे बड़ा मुश्किल हुआ यहाँ पर at the beginning. तो फिर उसके लिए मुझे बड़ा स्ट्रेस आउट होना पड़ा, मुझे बड़ी जो है वो चीज़ों को फेस करना पड़ा. एंड नाउ आई हैव डिसाइडेड कि यार मैं नहीं चाहता कि जो लोग आ रहे हैं वो इन चीज़ों को फेस करें. So I really wanted to make sure you know I'm helping as much students as I can, so at least they don't stress out with the things that you know we have faced, you know, like at that time, like 2019 I get here. So best of luck for your journey as well. And you know it's a nice place, good city, nice city, you know. Australia is overall very good place to live and you explore many things. It's gonna be a good experience. And also you can watch my curtain issue and I'm sorry Murdoch, these three you know vlogs that I have made, you know, I covered everything from you know scratch, like you know the environment, the university structure, like I mean you know how university looks like, and the departments, you know,
where you can go. So you can watch these videos as well, and if you have any question, you can recommend me